Sultan. The crisp sound of horseshoes on the tarmac, now getting louder. Prime Minister Narendra Modi waiting to receive the President and our chief guest. The crowd's also eager, warm and welcoming. Ladies and gentlemen, Sri Ram Nath Kovind, the President of India, accompanied by His Excellency Mr. Jair Messias Bolsonaro, President of the Federative Republic of Brazil. President Mr. Ram Nath Kovind and our chief guest, His Excellency Mr. Jair Bolsonaro, the President of Brazil, arriving for the Republic Day parade at Rajpath. Being received by Prime Minister Mr. Narendra Modi. The President of India and the state guest being received by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. And they'll now be presented to Mr. Rajnath Singh, Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, Shripad Nayak, General Bipin Rawat, Chief of Defence Staff, General Manoj Mukund Naravane, Chief of Army Staff, Admiral Karambir Singh, Chief of Naval Staff, Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadoria, Chief of Air Staff, and Defence Secretary Dr. Ajay Kumar. As the 38th President of Brazil. In 1977, he graduated from the prestigious Military Academy of Agudas Negras. In 1988, he joined politics as representative Rio de Janeiro for 7 consecutive terms, highlighting his deep connect with the masses. His Excellency, the President of Brazil, Mr. Jair Bolsonaro, and Mr. Ram Nath Kovind, the President and Supreme Commander of the Armed Forces, now being escorted to the presidential enclosure. भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के साथ आज के गणतंत्र दिवस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति श्री जायर बोल्सोनारो का राजपथ पर आगमन। भारत और ब्राजील का कई क्षेत्रों में गहरा सहयोग है, जिनमें व्यापार शामिल है। कई भारतीय शहरों में दौड़ती टाटा मार्को पोलो की बसें इसी का जीवंत उदाहरण हैं। दोनों देश सन 2023 में अपने कूटनीतिक संबंधों की प्लैटिनम जुबली मनाएंगे। Invitees in the adjacent enclosures greeting our dignitaries and waving as they proceed up the stairs. The enclosure is bedecked with beautiful flowers and ornate chhatris, flowers every step of the way. And shortly we'll hear the Commandant of the President's Bodyguard give his word of command for the national salute. The national anthem will be played, the national flag unfurled, and there'll be a 21-gun salute. Rashtrapati Angrachak! Salami Jagat! Rashtriya Salute! Madhya Dak! In this video, I'll show you how to set up an Riding tall, stately and perfectly groomed, men and mounts from the oldest regiment of the Indian Army move away towards India Gate and now making way for the parade. Time now for the parade to begin. From impeccable marching contingents to rhythmic martial music,
from advanced radar systems to formidable machine power, from the most unique camel band to exquisitely crafted tableaus, and from a heart-stopping display by an all-woman CRPF team to heart-pounding, scintillating flypasts. It's a spectacular lineup just waiting to unfold. In fact, there are many firsts this Republic Day. An anti-satellite missile, ASAT, the Dhanush artillery, an army defense marching contingent. अब धीरे धीरे वो अवसर आ पहुंचा है जिसका इंतजार सभी को है। कुछ ही पलों में राजपथ गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड बस शुरू होने को है। सबकी निगाहें सलामी मंच के बाईं ओर, जिधर से परेड आएगी और आगे बढ़ेगी। उत्सुकता बढ़ती हुई गणतंत्र दिवस समारोह की भव्यता राजपथ पर उतरने को है। तैयार हो जाइए। शक्ति, शौर्य और रंगों से पूरे राजपथ को निखरता और संवरता देखिए। Absolutely, as always, many young, eager and excited faces in the viewing enclosures. This is an experience that they will hold as special for a lifetime. We're sure the thrill of seeing their country's military might and discipline in all its glory at such close quarters. 41 aircraft of the Indian Air Force and 4 helicopters of the Indian Army's aviation arm will keep our eyes on the skies today, floral beginning to a pulse-racing closure. राजपथ पर सन 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोहों का आयोजन किया गया था। तब से हर वर्ष राजपथ जीवंत हो उठता है गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। निगाहें आकाश में। राष्ट्रपति भवन की ओर से मी-17 V5 हेलीकॉप्टर उल्टे वाई के आकार में उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। हमारे राष्ट्रीय ध्वज और सेनाओं के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर्स विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा के नेतृत्व में दर्शकों पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए। अन्य हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर जीनो थॉमस, स्क्वाड्रन लीडर रोहित और स्क्वाड्रन लीडर वशिष्ठ उड़ान भरते हुए। आज की परेड के परेड कमांडर दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक रहे लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री ने सन 1982 को कमीशन प्राप्त किया। परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के उप कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी के छात्र रहे हैं मेजर जनरल आलोक कक्कड़। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी मेजर जनरल कक्कड़ का कारगिल, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में व्यापक अनुभव रहा है। परेड उप कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़। वीरता, साहस, पराक्रम और शौर्य का साक्षात दर्शन कीजिए। सलामी मंच के निकट आ रहे हैं परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित योद्धा। ये वो हैं जिनसे दुश्मन तो क्या, मौत भी घबराती है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर और ऑनररी कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार संजय कुमार, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, टाइगर हिल के परमवीर, और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल साइरस ए बिठावाला, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्री राम कुमार, नायब सूबेदार चेरिंग
मुतुब। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र शांति काल में ऐसी ही वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। Inspirational in its true form. And now, the first contingent in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers is the 61 Cavalry, led by Captain Dipanshu Shioran. The 61 Cavalry is the only active serving horse cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, it has been awarded 1 Padma Shri, 1 Sarvottam Jeevan, Rakshak Padak, and many more. Its motto, Ashva Shakti Yashobal. Following the 61 Cavalry, the mechanized column, the first one, T-90 tank Bhishma, the main battle tank of the Indian Army, commanded by Captain Sunny Chahar of 86 Armored Regiment, equipped with a powerful 125mm smooth bore gun with one 7.62mm coaxial machine gun and a 12.7mm anti-aircraft gun. The tank can fire laser-guided missiles and engage targets at distances of up to 5 kilometers during the night, and is also capable of moving underwater. Rumbling down Rajpath, machine power. And following the T-90, we have the Infantry Combat Vehicle ICV BMP-2, led by Lieutenant Vijaypal Singh Sra of the 18th Battalion. The BMP is a high mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. It has recently been upgraded with thermal imaging sight kit, which gives it a capability to destroy any unknown enemy target up to a distance of 4 kilometers, and that too at night. In fact, it is one of the best amphibious fighting vehicles in the world. राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए अगला दस्ता K9 वज्र का कमान संभाली है 269 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन अभिनव साहू ने। K9 वज्र, जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है, इसे ऑल वेल्डेड स्टील सुरक्षा से लैस बनाया गया है। आर्टिलरी रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, जिसका अर्थ सभी जगह सम्मान और प्रतिष्ठा। राजपथ पर अगला दस्ता 93 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन मृगांक भारद्वाज के नेतृत्व में धनुष गन सिस्टम का 155 mm की क्षमता वाला धनुष गन सिस्टम एक नियंत्रित हवित्जर है, जिसे आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा डिजाइन किया गया है। राजपथ पर अगला दस्ता शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, जिसे हम लघु अंतराल में पुल बिछाव प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, आगे बढ़ता हुआ। इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन अधिराज पाठक।
ये एक विशेष प्रकार का उपकरण है जिसे 4 मीटर के फासले को भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है। The Sarvatra Bridge System. This detachment is commanded by Captain Anmol Preet Singh of a 64 Assault Engineer Regiment. The 15-meter Sarvatra Bridge System is a specialized assault bridge employed by assault and armored engineer units for bridging dry and wet gaps. And the vehicle-mounted multi-span mechanically launched mobile bridge system is designed for speedy deployment and retrieval under tactical conditions. The motto of the regiment, Agrani Achay, which means always first. And here in the sky, the advanced light helicopters Rudra and Dhruv flying past in a diamond formation, led by Lieutenant Colonel V.K. Bakshi. In a Dhruv helicopter, Lieutenant Colonel S.P. Singh and Lieutenant Colonel Rohit Devrani in the Rudras. Colonel R.M. Kanswal is also in a Dhruv helicopter. The Transportable Satellite Terminal, TST, has just gone by. The TST vehicles of the Corps of Signals, led by Major Sheena Nair of the 21 Signal Group. The motto of the Corps of Signals is Tivra Chaukas. The detachment of the Akash Weapon System, commanded by Major Ankit Pahil and Captain Satyanarayana Madami of 128 Air Defence Missile Regiment. On show, the military might of India. The 128 Air Defence Missile Regiment was raised in 1951 and the regiment is commonly known as Sky Gladiators. The motto of the Army Air Defence is Akashe Shatrun Jahi. These are the first of the marching contingents, the Parachute Regiment, led by Major Nikhil Kumar Maurya. They are better known as Red Devils or Paras. The Red Devils never walk in a parade. They are always on the double, which goes to show the high fitness levels that are required to be a para. They are chanting, "Hum Bharat ke veer aur hum apne desh ke rakshak, जाति भेदभाव को मिटाएं." The Grenadiers Regiment is being led by Major Anirudh Nair of the 20th Battalion. This is one of the most decorated regiments of the Indian Army, with several battle honours and 3 Paramveer Chakras. The motto of the regiment is Naam, Namak aur Nishan, and the war cry, Sarvada Shaktishali. बैंड की धुन कानों में और 80 बैंड वादकों का ये संयुक्त बैंड दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं रिसालदार मेजर राजेंद्र सिंह। बैंड धुन बजा रहा है अरुण वैद्य महावीर। सलामी मंच के सामने खालसाओं की सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का ये दस्ता मेजर अंजुम गोरका की कमान में, केसरिया पगड़ी, चुस्त कदम। पुरानी सिख पायनियर से गठित ये रेजिमेंट के वर्तमान स्वरूप का पुनर्गठन 1941 में किया गया था।
रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, तेग तेग फतेह, युद्ध घोष, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कैप्टन राहुल सिंह कटारिया की कमान में ये कुमाऊं रेजिमेंट का दस्ता भारतीय सेना की सबसे अधिक अलंकृत रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, जिसे सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने का गौरव हासिल है। आदर्श वाक्य, पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष, कालिका माता की जय। Going past the saluting base, the combined band of 11 Gorkha Rifles Regimental Center, 39 Gorkha Training Center, Kumaon Regimental Center and Garhwal Rifles Regimental Center. The tune Vijay Rath. And this is the Corps of Signals, marching contingent led by Captain Tanya Shergill, a fourth-generation army officer. The motto of the Corps, Tivra Chaukas, which means swift and secure. Going past the saluting base, marching for the first time on Rajpath on Republic Day, the marching contingent of the Corps of Army Air Defence, led by Captain Vikas Kumar Sahu of the AAD Centre, recently awarded the colours by the President of India. राजपथ पर सलामी मंच के सामने अब पहुंच चुका है बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप एंड सेंटर, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स ट्रेनिंग सेंटर, 3 EME सेंटर और मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के 80 बैंड वादकों का दस्ता। नेतृत्व सूबेदार विजय थापा। ये बैंड सैम बहादुर की धुन बजा रहा है। दर्शक रोमांचित इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस की परेड शान से आगे बढ़ रही है राजपथ पर। देशभक्ति, गौरव, अविस्मरणीय अवसर देश के हर नागरिक के लिए। हमारे मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति और अब सलामी मंच के सामने पूर्व सैनिकों की झांकी। राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करने वाले सैनिकों को ये झांकी पहचान और सम्मान प्रदान करती है। ये झांकी सैन्य बल के पीछे सैन्य बल को चरितार्थ कर रही है। और अब नौसेना का ब्रास बैंड, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर विंसेंट जॉनसन, म्यूजिशियन द्वितीय क्लास के नेतृत्व में जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। And this is the brilliance of the naval marching contingent passing by the saluting dais now. A smart salute there,
by Lieutenant Jitin Malkat as contingent commander, and we have Sub-Lieutenant Spandana Reddy, Sub-Lieutenant Ishu Tiwari, and Sub-Lieutenant Lata Shri as platoon commanders, the Naval Marching Contingent. And this is the first view of the naval tableau. The Indian Navy, silent, strong, and swift. The tableau showcases the might and firepower of the Navy in all three dimensions: surface, subsurface, and air, portrayed through the state-of-the-art assets. It also showcases the Navy's commitment to nation building. The indigenous aircraft carrier Vikrant, under construction at the Cochin Shipyard Limited, is an example of Make in India. In unmistakable Air Force blue, this is the Air Force Band. Warrant Officer Ashok Kumar leading his musicians, and the melody Sound Barrier Quick March. The band comprises of 3 drum majors and 72 musicians. The smart air warriors of the Air Force Marching Contingent, being led by Flight Lieutenant Srikant Sarma, Flight Lieutenant Mohit Kumar, Flight Lieutenant Reema Rai, and Flight Officer Vishnu Prasad, follow the commander. Smart marching, as if in one breath. And this is the Air Force tableau. The theme, Indian Air Force, the cutting edge. It showcases scaled-down models of the Rafale aircraft, Tejas, light combat helicopter, Akash missile system, and Astra missiles. The officers are attired in their flying overalls and look ready to take to the skies. And this is the tableau of the Defense Research and Development Organization, DRDO. It showcases India's anti-satellite weapon system, ASAT, Mission Shakti, commanded by Project Director Y. Srinivas Rao, one of the outstanding scientists of DRDO. Space has become an important dimension of the country's economic and military superiority. भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन और सलामी मंच के सामने लेफ्टिनेंट विवेक विजय मोरे की कमान में वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रेडार यानी ADTCR। ये रेडार विशाल वायु क्षेत्र की निगरानी, विभिन्न हवाई लक्ष्यों का पता लगाना, शत्रु या मित्र की पहचान, कमान केंद्र तक डेटा पहुंचाने जैसे कई महत्वपूर्ण काम करता है। इसे मैदान, पहाड़, रेगिस्तान में पूर्व चेतावनी के लिए तैनात किया जा सकता है।
राजपथ पर आगे बढ़ती परेड जो इंडिया गेट से गुजरती हुई अपने गंतव्य लाल किले की ओर। समंदर में जीवन रक्षक यानी तटरक्षक बल का दस्ता कमान संभाली है डिप्टी कमांडेंट गौरव शर्मा ने। समुद्र तट के क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करके वयम रक्षामः के आदर्श को चरितार्थ करता हुआ ये बल, इस बल ने हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में मदद की है। देश के हम हैं रक्षक, ये जोशीली धुन सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बैंड बजा रहा है और कमान संभाली है इंस्पेक्टर शमशेर लाल ने। Following their band is the CRPF marching contingent led by Assistant Commandant Naresh Kumar. The CRPF is the largest and also one of the oldest paramilitary forces in the world. The force has distinguished itself not only in combating insurgency and terrorism, but also through its duties in rescue and relief operations. The CRPF has the highest tally of medals awarded to any police force. Their motto, service and loyalty. And now, the Indo-Tibetan Border Police Brass Band going past the saluting base, led by Bandmaster Inspector Divakar Prasad. The tune, very well known, Sare Jahan Se Achha, Hindustan Hamara. And now adding to the sunshine on Rajpath, the Indo-Tibetan Border Police marching contingent, the contingent of Himveers, led by Assistant Commandant Amit Yadav. The brave and tenacious sentinels of our northern borders operate like snow leopards in temperatures up to minus 45 degrees Celsius and at altitudes of more than 18,700 feet. And they've also scaled 200 peaks in the Indian Himalayas and abroad, including the Mount Everest 4 times. राजपथ पर सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का बैंड वादकों का दस्ता, जिसमें 85 बैंड वादक शामिल, अमर सेनानी की धुन बजा रहा है। दर्शकों द्वारा करतल ध्वनि से अभिनंदन। और यह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मार्चिंग कंटिंजेंट डिप्टी कमांडेंट श्री प्रभ सिमरन सिंह के नेतृत्व में। आदर्श वाक्य, संरक्षण एवं सुरक्षा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के मार्चिंग दस्ते आगे बढ़ते हुए, और यह है दिल्ली पुलिस का बैंड सलामी मंच के सामने। दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए निकल रहा है, जिसका नेतृत्व सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। इस दस्ते में 4 सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस के 68 जवान शामिल हैं।
राजपथ पर शान से आगे बढ़ रहा अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिजेंट असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुधांशु धामा के नेतृत्व में। इस दस्ते में शामिल सभी जवान 6 फुट से ज्यादा ऊंचे। खास बात 1950 से लेकर आज तक ये लगातार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल रहा है और 14 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी हासिल की है। This is a view from our camera on India Gate, a panorama of the vista of Rajpath and a spectacular parade underway. I'm bringing so much cheer and intrigue to Rajpath. It's the BSF camel contingent in all its brilliance under the command of Deputy Commandant Ghanshyam Singh. These regal camels of the BSF, or ships of the desert, are dependable companions in the inhospitable terrains of Rajasthan and the Run of Kutch. And these camel-mounted troops have been instrumental in successfully tracking down notorious smugglers and extremists of Rajasthan and Gujarat frontiers. It takes 75 different items to dress up each camel with complete ceremonial splendor. And they're truly dazzling for this very special celebration. The BSF Camel Band, the only band of its kind in the world. Bandmaster Sub-Inspector Bodhraj leading these bandsmen, and the melody that they're playing, Hum Hai Seema Suraksha Bal. Camels gorgeously caparisoned and sailing and gliding down Rajpath, heads held high and oh so proud. Best of the best NCC cadets on Rajpath. The NCC Boys Band, led by Master Cadet Under Officer Yash Jain. And the band is playing the tune Kadam Kadam Badhai Ja.